Hello students, in previous class we discussed about the cells and grouping of cells, okay, where we discussed about the series connection, parallel connection and mixed grouping connections, okay. So in this lecture we mainly discuss about the carbon registers, or simply we can say color code registers, okay. Carbon registers or color code registers. So as we discussed in case of Ohm's law, that the proportionality constant that we take the registers are the devices that oppose the flow of electric current in an electrical circuit. But the resistor or the resistance of a resistor varies from ohm to million of ohms, okay. जो resistance आम कहूचे पहले से ओम रु आम मिलियन ऑफ ओम जाए वेरी करूचे, so that is a small value to extremely large value, okay. few ohms रु आम large ohms जाए भी measure करूचु, but the resistors, when we take, some resistors are wire wound, okay. Some resistors are made by wires and some resistors are made by carbon, okay. But the wire or the carbon resistors are mainly divided into two categories, that we say a resistors with non-changeable resistance, resistors with non-changeable or non-variable resistance, and that resistor we kept as fixed resistor, okay. से रेजिस्टर गुड़ा आम कहूचे पे कौन ना फिक्स्ड रेजिस्टर, जार रेजिस्टेंस आमर कांस्टेंट रहे सेटा आम कहूचे नॉन वेरिएबल रेजिस्टर बा फिक्स्ड रेजिस्टर. बट सम रेजिस्टर्स इन व्हिच द रेजिस्टेंस चेंजेस, ओके. जो रेजिस्टर रेजिस्टेंस चेंज होता है पहले सेटा कह जाए वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर्स, okay. In case of variable resistor, the resistance value continuously changes, okay. So let's know how can one measure the resistance of a carbon code resistor, okay. Because the resistor that we use in the electrical circuit have the color coding in their अपर रीजन. जो अपर रीजन अच्छी से रेजिस्टर से रेजिस्टर अपर रीजन देखो जब पिले से कलर बैंड एक्जिस्ट करता है, कलर बैंड एक्जिस्ट करता है. जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट आम कहूचे, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आम जनरली रेजिस्टर गोटे यूज करूँ, those resistors are generally color coded, okay, and the colors are like a band structure. ये टाइप देखिए पिले बैंड टाइप फॉर्मेशन होता है कलर बैंड, ओके. ये टाइप मन कर चारिटा बैंड भी थी पारे ताठू अधिक थी पारे, बट वी हैव टू प्रोसीड अप टू 4 बैंड. फर्स्ट 4 बैंड, ओके. सपोज बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 एंड बैंड 4, okay. So you have to remember that the band 1 and band 2 stands for digit, okay. जो band 1 और band 2 दुईटा जाक एक्जिस्ट करूची सेटा कहा पई डिजिट एक्जिस्ट करूची ना डिजिट पई, और जेटा हम कहूचे वैल्यू. band 1 और band 2 कहा को इंडिकेट करूची ना वैल्यू को, okay. whereas band 3 that indicates to multiplier. बैंड 3 पिले कहा को इंडिकेट करूची मल्टीप्लायर और ऑर्डर ऑफ 10 को इंडिकेट करूची. फोर्थ पिले आम कहूचे, फोर्थ बैंड टा कहूचे टॉलरेंस और लिमिट ऑफ एक्यूरेसी. फोर्थ बैंड टा को आम कहूचे पिले टॉलरेंस, थर्ड बैंड टा को आम कहूचे मल्टीप्लायर. फर्स्ट दुईटा जाक बैंड इंडिकेट करूची डिजिट बा वैल्यू को, बुझेला पिले. एई टाइप रे जो कलर कोडिंग रेजिस्टर आम जानि परिबा रेजिस्टर रेजिस्टेंस केते अछि, बुझेला पिले. एबे देखिबा जे को कलर को डिजिट बा को मल्टीप्लायर को इंडिकेट करूची, ओके पिले.
जदि आम मेजर करुचे कलर कोडिंग इफेक्ट रू mainly there are different type of color that exist in case of a resistor or carbon resistor. Okay, so in order to measure the color coding effect, suppose I write here first color, second digit, third one, second one is for band 1, this one is for band 2, this one is for band 3, this one is for band 4. Okay, so write here color. Okay, here band 1 that indicates to digit. पहले band 1 टा कहा को indicate करूची digit बा value को. Band 2 that also indicates to digit. Band 2 भी digit को indicate करूची. Band 3 पहले कौन कहिली ना multiplier. Okay, band 4 पहले कौन कहली ना tolerance. Band 4 को हमें कहूचे tolerance value. बुझीगला पिले ताले केमती हमें जानिबा को वैल्यूटा केमती रहउची जो डिजिट उडा रहउची पिले माने कर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके पिले सो करेस्पोंडिंग रोज गुड़ा ड्र करदे देखा इजी हम मार्क करने पहले 9 पर भी दुईटा कलर मोर एक्जिस्ट करे से दुईटा कलर आम मेजर करवा बट दे डू नॉट पोजेस एनी डिजिट वैल्यू. ओके 9 पर भी आम दुईटा कलर को इंडिकेट करवा जो दुईटा कलर की कौन से डिजिट को इंडिकेट करती ना सेमती एपटे रखी दियो डिजिट 1 रे 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके ओके जो मल्टीप्लायर पे कहूचे मल्टीप्लायर आसो फास्ट दुईटार 10 to the power 0 फास्ट आसला के 10 to the power 1 देन 10 to the power 2 देन 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 5 10 to the power 6 10 to the power 7 10 to the power 8 10 to the power 9 लास्ट जो दुईटा पिले रहिबो गोटे रहिबो 10 to the power -1 आ गोटे रहिबो 10 to the power -2. बुझिला पिले ना नहीं जो फॉर्मूला हमें कहूचे सेटा हमें केमिति मन रखा कलर गुडा को मन रखिया पई पिले मुटा फॉर्मूला कहि देबी से फॉर्मूला हाउ टू रिमेंबर द कलर हाउ टू रिमेंबर द कलर कोड जो फॉर्मूला को हमें सेठी के आसीबा. सो फॉर्मूलाटा होची पिले ब्राइट बॉय ओके रेव ओवर यंग गर्ल बट वेटो गेटिंग वेट. ओके यही फॉर्मूला रे पिले मन रखिबो कलर गुड़ाक ब्राइट बॉय रेव ओवर यंग गर्ल बट वेटो गेटिंग वेट देख पिले गोटे गोटे कलर को आसीबा आमे कहू जो ब्राइट कहूचु ओके पहले जो कलर कोडिंग अच्छी से कलर कोडिंग आम केमती मन रखा आम कहले ब्राइट बॉय रेव ओवर यंग गर्ल बट वेटो गेटिंग वेट. ब्राइट जो स्टार्ट होची जो ब्राइट कलरटा आसूची आम क्या पाखु स्टार्ट करवा पिले जेते आम ब्राइट कलर रू मेजर करूचु सो ब्राइट स्टैंड्स फॉर ब्लैक. देख पिले फर्स्ट जो कहले ब्राइट दैट इज ब्लैक. ओके साइड रे मेंशन कर दउची मन रखिया इजी हबो ब्राइट बॉय रेव ओवर यंग गर्ल बट वेटो गेटिंग वेट. ओके सो ब्राइट दैट इज ब्लैक देन आसला पिले बॉय दैट इज ब्राउन रेव दैट इज रेड ओवर that is orange. Okay, young that is yellow,
okay, gal that is green, but that is blue, okay, veto that is violet, okay, getting that is gray, okay, wait that is white, this one, okay. And last two color that exist, that is one is gold, another one is silver. One is gold, another one is silver. Gold there is no digit, silver there is no digit, but tolerance multiplier effect is 10 to the minus 1 and 10 to the power minus 2. Okay, so these are the different color code registers. And then come to the tolerance value. So tolerance value, that is plus or minus 20%. The accuracy level is 20%. This one is plus or minus 1%. Okay, this value is plus or minus 2%. This value is plus or minus yellow, that is 100% accuracy. Okay, that is plus 100% accuracy. Okay, then 0.5% accuracy. Okay, 0.25%, then plus or minus 0.1%, then plus or minus 0.05, then plus or minus 10%, then plus or minus 5%. This one is plus or minus 10%, plus or minus 20%. So this will be the different value of tolerance effect. Okay, so अब गोटे एग्जांपल देखिबा पिले, से एग्जांपल आमे जानिबा केमिति जे गोटे रेजिस्टर रेजिस्टेंस केमिति अछि। माने कर से हमकु पिले गोटे रेजिस्टेंस कहिछि, the band of the resistor, okay, the band of the resistor B1 is green. Okay, देखो पिले गोटे रेजिस्टर मन कर देइछि तुमको ए टाइप रो, जो रेजिस्टर जो बैंड गुडा को अछि से बैंड गुडा हमर ए टाइप रो फॉर्मेशन हेछि. Okay, first band is given green. Okay, second band पिले तुमको देइछि brown, second band is brown. Third band जो पिले देइछि, third band that is made of, third band is made of yellow, third band is yellow, and fourth band is gold. Okay, fourth band is gold. तले जो रेजिस्टर टा पिले देइछि, रेजिस्टर रेजिस्टेंस केते, रेजिस्टर रेजिस्टेंस केते. सो आसा देखिबा रेजिस्टेंस R इक्वल टू पिले फर्स्ट दुईटा जो वैल्यू रहिछि डिजिट को इंडिकेट करिवो. फर्स्ट दुईटा वैल्यू डिजिट दैट वी हैव टू राइट सीक्वेंस वाइज. ओके, फर्स्ट जो पिले देइछि ग्रीन, ग्रीन को आसले पिले तमर आसला 5. ओके, देन पिले कोन अछि ब्राउन, ब्राउन हेले त वैल्यू केते आसला पिले 1. ओके, फर्स्ट दुईटा को सिंपली तमे सीक्वेंस वाइज लिखो, दैट इज ब्राउन. देन थर्ड वन अछि कोन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर पिले येलो अछि, येलो रो वैल्यू केते पिले 10 to the power 4. सो रेजिस्टेंस इज 51 into 10 to the power 4 ohm with accuracy plus or minus 5%. Accuracy पिले केते रहइबो ना plus or minus 5% exist करे. So this is all about the color code registers. I think all of you remember how to memorize the color coding, that is bright boy, red hoover get young girl, but veto getting wait. Okay, bright boy, red hoover young girl, but veto getting wait. Okay, then come to the next portion, that is superconductivity. Superconductivity. So generally when we study the conductor, we find the resistance of the conductor gradually increases with the increase of temperature. ओके, जब हम रेजिस्टेंस गोटे कंडक्टर मेजर करूचे पिले, से रेजिस्टेंस रो वैल्यू कोन ही जाउची ना ग्रेजुअली इंक्रीज करी जाउची जते हम से कंडक्टर रो टेम्परेचर को इंक्रीज करूचे. Superconductivity. Okay, in case of conductor, when we increase the temperature, the resistance increases, but the strange behavior observed when we are lowering the temperature. Okay, when we are lowering the temperature of the conductor, there is a strange behavior
observe in case of that conductor. So not only the conductor but also in case of conductor, metals, alloy, low conductors, okay, high conductors, poor conductors, okay. So when we take so metals, alloy, poor conductors, oxides, these substances at low temperature gives a large behavior of their conductivity. जब लो टेम्परेचर नौचे पिले जो कंडक्टिविटी जो बिहेवियर लार्जली चेंज आसूची डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ओके। जेहेतु कंडक्टिंग बिहेवियर बा रेजिस्टेंस जो बिहेवियरटा टेम्परेचर ऊपर लार्जली वेरी करूची एट लो टेम्परेचर, सो दैट्स व्हाई देयर इज ए थ्योरी अराइजेस, दैट थ्योरी इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, okay. So superconductivity is any property of a metal, oxide, alloy, poor conductor, okay, that gives almost zero electrical resistance at the low temperature, okay. Point you have to note, the substance like metal, oxides, non-metals and poor conductors, okay, oxides, they generally behaves zero electrical resistance at low temperatures, okay. So that's why a property arises that we say superconductivity. So what is superconductivity? So the property by virtue of which metals, conductor, metals, oxides, alloys and poor conductors gives or shows almost zero electrical resistance at very low temperature at very low temperature is known as superconductivity, because when we decrease the temperature to extremely lower value, the resistance of these substances gradually decreases, okay. And if we take an example of superconducting material, then the superconducting material, if I take a mercury, okay, in case of mercury, if I take mercury, in case of mercury, when we decrease the temperature, if we draw the variation of temperature versus resistance, okay, जब हम गोटे मर्क्यूरी केस रे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस रो वैल्यू टाको मेजर करबा, टेम्परेचर टाको पिले जनरली केल्विन रे रखिबो, रेजिस्टेंस टाको पिले रखिबा ओम रे, okay. In case of mercury, if I take the variation of temperature with resistance, then we find when the temperature is decreased, then the resistance also decreases, and at certain temperature, that is 4.2 Kelvin, at 4.2 Kelvin, the resistance of the mercury suddenly drops to zero. Okay. So mercury gives its superconducting property at 4.2 Kelvin. Mercury रे जो superconducting property टा exist करे, so superconducting property टा को कहा जाए कौन ना, जो superconducting property exist करছে केते temperature रे ना 4.2 Kelvin temperature रे, okay. up to हमें the lower temperature up to 125 recent discovery जदे देखिबा हमें पहले recent discovery up to हमर 125 जाय भी हमें measure करलुनी, okay. 125 Kelvin जाय भी superconducting property use हेई पारुछि, okay. So in case of mercury at 4.2 Kelvin, the resistance corresponds to 0, okay. So below 4.2 Kelvin
it behaves as superconductor, but above 4.2 Kelvin it is not a superconductor. Okay, because above 4.2 Kelvin its resistance changes, okay, and resistance increases with increase in temperature. Okay, so जो सुपरकंडक्टर आम कहे मेनली जो बिहेवियर आम कहे पे सुपरकंडक्टर तुम आउ टाइप पार ऑक्साइड जब आम कंसीडर करवा ऑक्साइड रे लैंथेनम स्ट्रोंसियम क्यूप्रस ऑक्साइड, ओके, जेटा आम कहे La2-X गोटे ऑक्साइड रे जब कहे पे ऑक्साइड केस तुम ये टाइप नहीं पार La2-X स्ट्रोंसियम X CuO4 एटा भी गोटे सुपरकंडक्टर. ओके, जब ऑक्साइड कहवा लैंथेनम स्ट्रोंसियम क्यूप्रस ऑक्साइड एटा भी मोर आसीबो गोटे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स भीतर भी आमे नहीं पारिबा जोटा आमे रिसेंट डिस्कवर ऑक्साइड गुडा को मेजर करूचे. ओके, जब आमे सुपर कंडक्टिंग वैल्यूटा को एटा को सपोज मो पिले टीसी लिखुची. ओके, जो 4.2 टा को एटा को मार्क कर दवा सपोज टीसी. व्हाट डू यू मीन बाय टीसी? ओके, टीसी दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर. Okay, what do you mean by critical temperature? Okay, so critical temperature is the temperature at which, so what is critical temperature? The critical temperature, or it is called transition temperature. एटा को कौन कहा जाए पिले? Transition temperature. The temperature below which metals, oxides, alloys and poor conductors gives zero electrical resistance. Zero electrical resistance. So temperature below which metals, conductors, superconductors gives zero electrical resistance is called transition temperature. ता माने बिले transition temperature below superconducting property, above transition temperature there is conducting property. They behave as a conductor, but below transition temperature it is superconductor. So this one is the transition level. ଯଦି transition को low ରୁ आसीबा पिले superconductor, above transition temperature that is conductor behavior. Okay, because temperature सहित resistance vary करिवो. एठी मो resistance 0. So below transition temperature it is superconducting property, above transition temperature it is conducting property, normal conductor. Okay, so this is about the superconductor. Okay, so there are different type of materials given with their superconducting temperature, transition temperature. जदि हमें indium INSB नबा बा हमें जदि consider करबा को टाइप रे पिले aluminum case consider करबा गोटे alloy case नेबी जदि हमें indium antimony consider करबा जार जो ट्रांजिशन टेम्परेचर आसे गोटे आलोय टाइप रो कंपाउंड यार ट्रांजिशन टेम्परेचर पिले आसे 1.9 केल्विन. जदि एल्युमिनियम हम कंसीडर करबा पिले एल्युमिनियम रो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर आसे तार जनरली 1.18 केल्विन रेंज रे रहे. सो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर रे मेटल्स ए टाइप रो सब्सटेंस गुडा कोन करंती ना से मानकर लो सॉरी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करंती. ताहले जो सुपर कंडक्टिंग केस हम कहूचे सर सुपर कंडक्टिविटी एप्लीकेशन कोन आसुची? व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस of superconductivity? जदि हमें पिले एप्लीकेशन लेवल को आसीबा मेनली हमें सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी टा ऑब्जर्व करछे जेहेतु लो टेम्परेचर रे. सो इट इज we have to place the instruments extremely low temperature in order to take the superconducting property. Superconducting property पिले पाइबा कोले हमें गोटे सब्सटेंस को extremely low temperature रे रखिबा पई पड़िबो. ताने what are the applications of superconductivity? Okay, so first application pile we can say first thing जे हम कहचे
देयर इज नो रेजिस्टेंस जदि आम रेजिस्टेंस नहीं तमें जो पावर लॉस आसीबो पावर लॉस मस्ट बी 0 ओके सो एज देयर इज नो रेजिस्टेंस means no power loss. No resistance means no power loss. P equal to पिले I square R कही ओके रेजिस्टेंस जेहेतु नाही ताल तो पावर लॉस हेबो नाही सो सुपर कंडक्टर टाको जत आमे लो रेजिस्टेंस रो कहूचे द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पाई बा ए बिहेवियर पाई तार नंबर ऑफ एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करे ओके सो फर्स्ट एप्लीकेशन वी कैन राइट the first application okay ये जो behavior पाई no resistance means no power loss जो power loss नहीं ये जो property पाई ता large number of applications exist करे first applications we can say generally the powerful magnets are made of superconductors. Powerful magnets are made of superconductors okay because when we take such very quantities okay powerful magnets are made of superconducting coils okay in many laboratories we use the coils in order to measure the magnetic field okay and when we take the high power magnet concept then we have to take the superconducting coils so powerful magnets are made of superconducting coils second application that we can say that is superconductivity is superconductivity is being used in laboratories. Superconductivity is being used in laboratories for, or we can say to produce high level research purpose. High level research purposes. Third applications we can say superconductivity used to measure activity is used in thin film device and leviated trains. Okay, so superconductivity used in thin film device and levitated trains. Okay, these are the few applications of superconductivity, but one demerit. What is the main drawback? देखो पहले main drawback टा कौन है आसुची? What is the limitation of superconductivity? When you measure the limitation, one limitation that is can clearly visible that we have to take all the device at low temperature. जितने भी हमें मेजरमेंट पिले नौचे सबुड़ा कौन रखिबा ना लो टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर दे डू नॉट बिहेव एज सुपरकंडक्टिव सो व्हाट इज द limitation of superconductivity so one limitation that means we can say that is the materials must have to kept at low temperature in order to measure superconducting property.
in order to measure the superconducting property, that is the major limitation of the superconductivity, that is the materials must have to kept at low temperature in order to measure the superconducting property. So this is all about for the today's section. Okay, so in next session we discuss about the Kirchhoff's law and its Kirchhoff's law and its application to Wheatstone bridge. Okay, thank you.